Hello students. Now next new validator control is the range validator control. Now let us see the what is the range validator control will do. Yes, range validator control means name suggests that range validator is used to validate if the given data is in between the specified range or not. Yes, तो यहाँ पर ये रेंज वैलिडेटर क्या करेगा कि डेटा जो है वो स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए, वो चेक करेगा रेंज वैलिडेटर कंट्रोल. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक डेटा चेक करना है कि डेट एज कैन नॉट बी मिनिमम लेस देन 18, यस, और मोर देन 100 नहीं होनी चाहिए. सेम वे सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 5000 एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 लाख. सो ऐसा कोई भी अगर आपको रेंज रखना है, और फॉर एग्जांपल मार्क्स कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड मोर देन 100. यस, अगर आपको ऐसा कोई भी वैलिडेशन रखना है या रेंज रखना है, देन you can use the range validator control. Now let us see the properties of the range validator control. First one is the minimum value. It is the integer value and we can get or set the minimum value of the range. So here we can set the minimum value of the particular range. Next one is the maximum value. Maximum value means what? Gets or set the maximum value of the range. So it will contain the maximum thing. Yes, integer value maximum contain करेगा. Next one is the type. Type can be a integer, string, date, currency, double, used to specify the data type to validate. Means what? Inside the type, the type is what? The data type. Yes, it is a data type. Because we have to compare, or we can say minimum and maximum thing, so we need to give a type. It can be an integer type of data, it can be a string type of data, it can be a date type of data, currency or double type of data. Yes, integer type of data that we see in the example of the integer type of data. Now let us see the example of the date type of data. Like if you want to compare the date between all the dates are, we have to input from the financial year. So you can set the minimum value as the 1st April and maximum value as the 31st March. Yes, so by using this date, if you are going to validate the integer data, then type must be integer. If you are going to validate or give the range of the string data, then type must be string. If you give the or we can say validate the date data, then type must be date and currency and double. Yes, like this. Next one is the control to validate. See, this one is the common property which is used inside the every control. Gets or sets the input control to validate. For example, the ID of the ASP.NET control. Here what we have to set the ID of the ASP.NET control. So जो कंट्रोल हमें वैलिडेट करना है उसका आईडी हम यहाँ पर सेट करेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर. नेक्स्ट वन इज द डिस्प्ले. डिस्प्ले कैन बी अ स्टैटिक और डायनेमिक. Yes, static or dynamic. We understand this particular property in previous controls. Same way we also understand the enable, error message, text property, validation group, set focus on error. We learn all the common properties. So unique properties are what? Minimum value. Next one is the maximum value and type and control to validate. Yes, and let us see. देखो, अगर हमें रेंज वैलिडेटर का यूज करेंगे तो ये तो हमें रखना ही है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. देन वी हैव टू आल्सो इंक्लूड द टाइप प्रॉपर्टी
एंड कंट्रोल टू वैलिडेट, और ये बाकी का तो कॉमन प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा, यस, बट these are the unique. Okay, now let us see the example of the range validator control. Now let us see the example of the range validator control. Here I took one field, that is the field name is called as a age, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या रखा है, टेक्स्ट बॉक्स रखा है, और उसका हम प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, that is a txt age. Yes, okay, you can also take the combo box. Yes, basically combo box are preferred, but हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं रेंज वैलिडेटर का, तो उसके लिए मैंने ये रेंज वैलिडेटर को लिया है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स को लिया है. नाउ लेट अस सी द एरर मैसेज दैट एज मस्ट बी above 18 years. Yes, so एज 18 years से अबव होना चाहिए, and we also print and not more than 100 years. Okay, ऐसा कुछ हमने वैलिडेशन रखा है. नाउ लेट अस set the other property, that is the minimum value and maximum value. First we set the control to validate, so here we need to set the txt add. जिस कंट्रोल को हमें वैलिडेट करना है वो हम यहाँ पर इसका आईडी यहाँ पर हम देंगे. then next one is the type. It is not a string. Yes, it is a what type of data, integer type of data. And next we have to set the maximum value is 100. Yes, and the minimum value is 18. Okay, and we also set the set focus on error is equal to true. Now let us run this particular application, and you can see the output. ये अभी नहीं वैलिडेट करेगा. इफ यू इनपुट सम काइंड ऑफ वैल्यू लाइक दिस, then it will match. If you input like 12, then it will also match. If you input the like 18, yes, then it will also match. Yes, so first we need to input the name, then we need to input the email, yes, and this one, so form will be pushed back. Yes, if you input the wrong value, then this thing will not going to be work. Yes, so I hope that you understand how we can use the range validator control. So carefully set the properties like what we can say, minimum value and maximum value, and there are 4 property we have to carefully set. First one is the control to validate. Yes, in this we have to give the ID of the control. जिसको हमें वैलिडेट करना है उसका हम यहाँ पर ID देंगे, उसके बाद हम एरर मैसेज देंगे, then maximum value देंगे and minimum value देंगे, and then we have to set the type particular हम क्या कौन सी टाइप का डेटा वैलिडेट करने वाले हैं वो टाइप हम यहाँ पर स्पेसिफाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कर रहे थे इंटीजर, सो आई गिवन अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा. So I hope that you understand this particular thing. Thank you.